Hello everyone, a very good afternoon. I welcome you all to the session of answer writing that we have been conducting for last few weeks. And last week I talked about the international relations, and the very first segment of that was taken care of, and today we are starting with the second segment, that is international, global and regional institutions. A very good afternoon, Aditya. A very good afternoon. So today we'll be looking at this perspective, okay? A very good afternoon, Roshan, where you'll know that it is so easy to write about these international institutions or some of the global institutions which have been made for some of the functions, okay? So for first few minutes, I'll try to give you a brief of what kind of questions UPSC has asked. कैसे सवाल पूछे गए हैं UPSC में, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा समझने में कि कैसे आंसर करना है. Okay? So if you look at the nature of the questions, okay, basically there are two types of questions on international relation. Two types on these international and regional institutions. Okay, two type of questions have been asked in the past. Okay, and they are quite simple. They are not doing anything extraordinary. They are very quite simple questions. When you'll see, you'll find that the first type of question related to the international or global institutions is, first one is what their function is. Okay, related to the functions or the role that they are playing in the international arena. And the very second one is related to the reforms that these institutions require. ठीक है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पे दो ही टाइप के क्वेश्चन है. सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट आर दीज ऐसा पार्ट जोड़ा गया है, बट दैट इज विद द फंक्शन और रोल. ओके, and what reforms are required. These two kind of questions are only asked, and today I'll give you a template which will help you to address all the questions about any of the institutions, and you can use this template to write the things that I'm going to tell you, and you can get it checked from any institution, from any individual. They'll definitely tell you that you have written the answer in the right direction. Okay, so the purpose of this session is not only to help you to write better answers. The purpose is also to indicate this thing that many of the roles that these institutions are playing are quite fixed. They are very, very predictable things that they are doing. Okay, and all of them are doing more or less the same things. So we'll see how. Okay, so let me help you with these global institutions. Okay, and the list already have shown, so there should not be any confusion that I'm going to talk about some economic grouping or some political grouping or any limited groupings. The things that I'm going to talk about is diverse. It can be United Nations, WTO, IMF, ILO, International Labour Organization, FAO, WHO, WTO, NATO, UNESCO, International Criminal Court or International Court of Justice. Okay, the list goes on, but the functions that they are performing or role they are supposed to perform are quite similar in nature, in world parlance or regional parlance. Okay, so we'll see the templates. Okay, now the first thing that you need to understand is any international body that is made, okay, it has to look at some governance. It has some governance function. Okay, the function that is governance. It can be global or regional level, but the role that it is playing is of governance. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको गवर्नेंस की बात करनी है. इसमें कभी भी क्वेश्चन आता है, यू नीड टू टॉक अबाउट द गवर्नेंस एस्पेक्ट. ऑफ कोर्स देयर इज अ नेगेटिव साइड टू इट कि उसे सॉवरेन पावर्स नहीं है, तो वो हमारा सेकेंड पार्ट में आएगा जब हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे. व्हेन विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, विल टॉक अबाउट इट. ओके,
The second function that any of the global institutions or regional institution is doing is information creation and exchange. Information creation and exchange of the very information. ठीक है, ये दूसरा रोल है. आप यूनाइटेड नेशन का भी ले लेते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू लेट्स से इट्स सिक्योरिटी काउंसिल. उसका काम क्या है? दैट whenever there is a threat perception or something like that, it gathers the data and then spreads it to rest of the people. ठीक है, आप यही चीज WTO के बारे में बात करिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो ट्रेड रिलेटेड गवर्नेंस, ट्रेड रिलेशन, इंफॉर्मेशन क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ द वेरी सेम. WHO हेल्थ रिलेटेड, ILO लेबर रिलेटेड. ठीक है, तो आप किसी को भी फिट करिए. यूनेस्को रिलेटेड टू योर सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल थिंग्स. सो दे आर डूइंग दिस थिंग. ये कॉमन फंक्शन है किसी का भी, एनी बॉडी विल सी. ओके, नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी. Regulatory and normative function. Regulatory and normative function. So regulatory, it regulates. अगर कोई law बना, information बना, there is some legal aspect. Okay. So a very good afternoon, Brinda. A very good afternoon, Ankit. So you people are late, but I hope that you'll grasp everything. बहुत late नहीं हुए आप. ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ दीज बॉडीज, कोई भी आप बॉडी का नाम लीजिए, वो ये काम करती हैं. ओके, ईच वन ऑफ देम आर डूइंग दिस रेगुलेटरी, नॉर्मेटिव फंक्शन, इंफॉर्मेशन क्रिएशन. ओके, नॉर्मेटिव इज एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप. रेगुलेट भी कर रहा है और एस्टेब्लिश रिलेशनशिप करवा रहा है बाकी देशों में भी. ओके, सो दे आर डूइंग दिस थिंग. नाउ द फोर्थ थिंग, रेगुलेट करना है तो किस चीज को करेंगे? ओके, there has to be certain principle. So what it does, it promulgates. Okay, formation and promulgation of the principles. Formation and promulgation of the principles. Okay, तो कोई भी एजेंसी है, द प्रिंसिपल रिलेटेड टू ट्रेड वो WTO करेगी. सिक्योरिटी, वर्ल्ड सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करेगी. हेल्थ, WHO करेगा. ओके, सो दे नॉट ओनली फॉर्मुलेट. ओके, दिस इज फॉर्मुलेशन. दे नॉट ओनली formulate but also create the belief system. Promulgation is what? Creating the belief system in the very principle जो है, that has been created. Okay, तो वो function भी क्या है, ये करने वाला है. Okay, talk about any institution, आपको जो दिमाग में आता है उसको आप लगा के देखिए. Now the next function is promotion of cooperation and consensus. Promotion of cooperation and consensus. Okay, so any type of institution that is made so that all the members can cooperate amongst themselves, और वो सारे मिलके क्या है, they want to develop a consensus so that world can implement the thing. Okay, so this is again a common function of every institution. ठीक है, आप इन चीजों को क्या है कि इनफैक्ट नेशनल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं. इफ यू आर गोना टॉक अबाउट सम ऑफ द नेशनल बॉडीज, उनका भी काम यही होता है लगभग. ठीक है, तो ये चीजें, इट इज नॉट लाइक ओनली इंटरनेशनल रिलेशन. नेशनल बॉडीज में भी जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसमें से आधे फिट हो जाएंगे. आधे क्या, ऑलमोस्ट 80%. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 10 पॉइंट्स, 8 ऑफ देम विल fit everywhere, and then you write your answer, you'll see that you'll definitely get good marks. ठीक है, so okay, so I hope that everybody is getting this thing. Vrinda, Roshan, Ankit, all good? Okay, now अब कुछ किसी किसी का क्या है कि conflict हो जाता है. Okay, everybody has decided to cooperate and there was a consensus built, but there is some group of nation or individual nation जिसे लगता है कि they are not getting the right thing, उनके साथ सही नहीं हो रहा है. Okay, and there is no justice being given to them.
So there is also the function of common conflict resolution. Okay, so this acts as a platform where these nations can reach or individual nation can reach which feels like uske साथ सही नहीं हो रहा है. Okay, there is no justice with it, so it can also reach out to the institutions that have been built. Okay, अब ये सारे functions तो हैं, but until and unless the fund that is collected for a common purpose, अब global institution है उसके पास fund होता है, it has some fund, and this fund has to be utilized for the good of all, सभी के लिए करना है. तो इसका एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि whatever the money that is collected with the institution, it has to allocate the fund for the benefit of the members. Okay, so allocation of resources. Okay, अगर आप WHO को ले लीजिए, so it decides कि how much money should go to regular diseases, how much to communicable, how much to African region, how much to Asia. Okay, and that too based on the requirement, real situation जो demand कर रही है उससे related क्या है कि ये चीज होनी चाहिए. So allocation of resources is another common thing that all the institutions of the world do. ठीक है, global institutions का ये काम होता है. Plus there are lot of things that are emerging in the field. Okay, and many of the nations are not having the resources to get the information or to adapt to the newer things. So these institutions also play a role of provider of assistance related to technology. ठीक है, so they provide technical assistance as well. Okay, and if you have read WTO or if you have read ILO, you have read about United Nations, all of them have this thing, technical assistance का उनके यहाँ provision है. Okay, आप किसी भी institution की बात कर लो, any of them, okay, any of them you'll see that all of them has this wing for technical assistance to those nations which are not able to do it themselves. ठीक है, सारे members को ये चीज मिलनी चाहिए. Plus these institutions also has a humanitarian aid. They go for humanitarian aid. ठीक है, कुछ कहीं पे crisis होता है, problem होता है, so they had to take care of this thing as well. Okay, so humanitarian aid and development. Now this is a point which humanitarian aid and development. For example, अभी क्या है? If you look at the crisis in Sri Lanka, okay, so some of the global institutions like World Bank, IMF, even United Nations is concerned, okay, and they are looking forward to ways in which they can help this. ठीक है, इसको help कैसे करेंगे इसके बारे में सबका wing है. Usually whenever we use this term, many of the people get confused that ये तो human rights वाले का काम है. Okay, they think that this thing is only associated with the human rights commission. ठीक है, human right institution है, उन्हीं से मतलब है, but that is not true. Okay, they all have a humanitarian side for the member nations. Okay, non members को हो सकता है help नहीं करें, but if some country is a member, then they look forward to each and every avenue in order to help them when there is a crisis like situation in that country. ठीक है, now again one more point that is not universal, maintenance of peace and order in the regions where they are functioning. ठीक है, maintenance of peace and order. Okay, and this is something which is usually more associated with United Nations related agencies, the bodies that are associated UN. बट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये वाला रोल भी सारे प्ले करते हैं, बट द नेचुरल थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 10 पॉइंट से ज़्यादा 9 पॉइंट से ज़्यादा आप एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं. ओके, सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इन द एग्जाम, वी
एक्सप्लेन 6-7 पॉइंट्स एंड देन वी राइट अदर फंक्शंस, उसमें एरो वेरो दे के हमने बाकी लिख देना है. ओके, विल राइट लाइक दैट. सो आई होप दैट दिस मेक्स थिंग्स इजियर. तो एक टाइप जो है इसका एक पार्ट, टेक एनी क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी that talks about the global bodies and if you have to talk about their roles, आपको यही लिखना है. ठीक है, you have to talk about these things only. and the other thing, जो सेकेंड पार्ट मैंने बताया कि दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, द सेकेंड पार्ट इज रिफॉर्म से रिलेटेड, दैट द रोल दैट दे हैव बीन प्लेइंग इज not able to achieve the things, they were not able to achieve the things that was intended. क्वेश्चन का नेचर इस तरह से हो जाए, या फिर what are the problems with these. okay, this can be there. A very good afternoon Ravi, good afternoon Ashish. So you people are little late, so I will want you to make sure that you are watching the thing later. बाद में देख लेंगे जो आपका मिस हुआ है. ठीक है, इस चीज से आंसर लिखना आपको बहुत आसान होने वाला है. नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है. व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव कवर्ड. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स और द रिफॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड. ठीक है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू सी इज प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म रिलेटेड एस्पेक्ट. ठीक है, दो ही टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं एंड इट इज रियली इजी टू हैंडल दिस क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, बिना प्रॉब्लम के आप कर सकते हैं. लाइक आई सेड, दिस ग्लोबल गवर्नेंस जो हमने लिखा था, गवर्नेंस वाला, ठीक है, ये वहां भी कॉमन पॉइंट था, बट गवर्नेंस इज अ चैलेंज फॉर दीज इंस्टीट्यूशन. दे फेल टू डू इट बिकॉज दे आर विदाउट सॉवरेन ऑथोरिटी. ओके, ये इनके पास कोई ऑथोरिटी ही नहीं होती है. विदाउट सॉवरेन ऑथोरिटी, विदाउट सॉवरेन ऑथोरिटी, कोई ऑथोरिटी नहीं है. ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन कहता है चाइना को कि ऐसा करना है, वो बोलता है भाग जाओ, नहीं करेंगे. ठीक है, यू कैनॉट डू एनीथिंग, यू कैनॉट डू एनीथिंग. मतलब लाइक अब आपका क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपील कर करके थक गया, कंट्रीज नहीं मान रही थी, नहीं मान रही थी. चाइना कंप्लीटली डिनाइड. ठीक है, एंट्री ही नहीं दिया. दे वर नॉट इवन एबल टू चेक इंस्टेंटली वेदर इट वॉज लीक्ड फ्रॉम सम लैग. उन्होंने बोला वेजिटेबल मार्केट से है, सबने मान लिया वेजिटेबल मार्केट से है. ओके, फिश मार्केट से है, जो बोला वो मान लिया. ओके, सो ड्यूरिंग कोविड, so this is a big challenge for any of the institutions because none of these institutions have sovereign authority. इनकी कोई authority नहीं है, ये कुछ नहीं करवा सकते हैं. ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, that they are misused for propaganda, okay, by the powerful nations. Misused for propaganda. ओके, अब जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया है, ओके, द कंट्रीज विच हैव मेड मोर कंट्रीब्यूशन दे टेंड टू इन्फ्लुएंस देम. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से अभी का ही देखते हैं, व्हाई WHO फेल्ड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट चाइना. चाइना इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर. पहले यूएस था, तब यूएस की बात मानता था. देयर वाज सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन हिस्ट्री व्हेन यूएस वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, सो इट यूज्ड टू टेल दैट. ठीक है, अगर आप यूनाइटेड नेशन का ही देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मिसयूज्ड फॉर प्रोपेगेंडा. चाइना, जब भी इंडिया की बात होगी, व्हेनेवर देयर इज अ टॉक ऑफ परमानेंट सीट फॉर यूनाइटेड नेशन फॉर इंडिया, ठीक है, इन यूनाइटेड नेशन, चाइना डिनाइज वीटो पावर. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे साथ रिलेशन अच्छा नहीं है. ओके, पाकिस्तान क्राइज फाउल, सो चाइना वीटोज, तो हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता है. ओके, थर्ड थिंग इज द कलेक्टिव वर्क मोस्टली फेल्स इन प्रैक्टिकल टर्म्स. ओके, अभी देयर इज सम न्यू निगोशिएशन दैट इज हैपनिंग इन WTO. ठीक है, WTO का मान लेते हैं, किसी मुद्दे पे क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं. नाउ
there will be a group of the developing nations, least developed nations and the developed ones. They will keep confronting over the issue. एक ही मुद्दे को लेके सालों साल खींचते जाएंगे, 10 साल हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ठीक है. रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज दैट प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ द ओशियंस बाय 2030 नहीं करवा पाए. क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ देम वर नॉट रेडी. सो कंसेंसस बिल्डिंग और कलेक्टिव वर्क is mostly impractical when it is influencing especially some of the powerful countries. ठीक है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ओके, उसको ये कुछ नहीं कर पाते हैं. द अदर इज all these institutions lack democracy. Okay, all these institutions lack democracy. They are not transparent towards each and every country. Okay, most of the information is shared by the developed part of the world or the ones who are contributing. ठीक है, लेकिन वही चीज क्या है कि नहीं बताई जाती है, जो कि क्या है, that exchange of information, consensus building, these are the functions of these institutions. लेकिन हो क्या रहा है, what is happening in reality, that some of the things are exclusive for the power blocks. ठीक है, जो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उनका काम करती है ये. ओके, सो हाँ बेटा रवि, अमेरिका और यूरोप की तरह. ओके, दिस इज समथिंग दैट दे आर डूइंग. हाँ हाँ रोशन बेटा, इसको भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा ना, यू कैन यूज दिस पॉइंट्स इन इंडियन बॉडीज एज वेल. ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है. ओके, नाउ ऑल ऑफ देम टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड community, but in practical terms we see that there is no representation of the world community. Okay, have you heard of any news? अभी आप कभी भी न्यूज सुनते हैं कि some African nation is demanding something. Okay, some of the least developed countries are demanding something and it is being done. Okay, ये सिर्फ वो बेचारे जाते हैं, घूम फिर के खाना खा के आ जाते हैं, ऐसा ही चल रहा होता है. Okay, even if they say something, only some of those aspects are admired which are like of no value at the global level. उनके कल्चर को अच्छा बोल देंगे, उनके प्रोग्रेस को अच्छा बोल देंगे, जो कि निगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में भी नहीं पहुंचा है. ओके, दे टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी इज नॉट देयर. ऑलवेज द माइटी प्रिवेल्स. ओके, अब दूसरी दिक्कत क्या है, ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज क्राई अबाउट द फाइनेंशियल क्रंच. ठीक है, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच से गुजरते रहते हैं. And this is one of the reasons that contributors usually arm twist these institutions and get things done as per their own demand. ठीक है, फाइनेंशियल क्रंच की आप बात कर सकते हैं. And the biggest of all is that most of these institutions were built after Second World War. Okay, then the world order was different. Now they are not ready to recognize the new world order. Okay, they do not recognize the new world order. Okay, ये आज की डेट पे ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि some of the Asian nations are more dominant today. Okay, the combined, if you talk about South Korea is doing well, Japan is doing well, India is doing well, China is doing well. Okay, so if you talk about all these things, they simply don't recognize it, which becomes the reason of more and more conflicts. ठीक है, जिसकी वजह से और conflict बढ़ रहे हैं. Okay, now everybody is clear with this? यहां तक clear है? Okay, they also fail to exactly provide the humanitarian aid. Okay, तो वो सारे पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं, दैट आर द फंक्शंस. इनफैक्ट इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम्स, ओके, ऑल दीज हेड्स आर problematic as well. Okay, so though in order to ensure that it looks a little different,
you have to utilize these. और जिस साल भी पूछता है, okay, plus the problems that makes the news, जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है, okay, so you have to add that one and probably it has to be your first point. Okay, 2-3 things usually appear in the newspaper, rest of the points are always going to be the same. Okay, any year pick up the question, look at the questions related to international organizations, and you will see that same thing is happening again and again. Okay, यही चीजें हो रही हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन बन रहा है. आप कभी कभी पेपर उठा लीजिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लास्ट 1 decade ओनली. टेक द पेपर्स फ्रॉम लास्ट 40 years, सिंस 1979, जब से ये जीएस का पेपर है. ठीक है, जीएस 1 2 3 4 अलग बात है, लेकिन पहले भी क्वेश्चन आते थे. यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस related to the global institutions and they'll be able to write good answers. Yeah, Ravi beta, it is true. Is still not permanent seat in the United Nations Security Council, but though a lot of hue and cry is over our increasing population, but you'll see in future that this strength of population will become a reason that all the countries will recognize India as a power and will get a seat in UNSC. If India does not get a seat in UNSC within 5-7 years, you can be assured that United Nation is going to be defunct. ठीक है, India is the only country which is going to become the market for the world. Okay, China's population has started shrinking. तो चाइना का जो एडवांटेज था जिसकी वजह से उसको वैल्यू दे रही थी वर्ल्ड, वो अपने आप कम हो रहा है. दैट यूएस नोज, चाइना नोज, रशिया नोज, सो एवरी कंट्री इज गोना फोकस ऑन इंडिया. ओके, अभी पाकिस्तान कितना भी चिल्ला लीजिए, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है. ओके, so there say has no meaning in the global arena. India is going to become the most dominant nation in coming near future only. You'll see this thing happening in 10-15 years when we'll be established as the most populous country of the world, biggest market of the world. We'll have our own way in the global arena. Okay, this is thing that we are definitely going to achieve. So I hope that these things made things simpler for you. International related question you can go and you can see. These same things can be utilized for national bodies as well. ठीक है, आप यही points use करके उनके भी बहुत अच्छे आंसर लिख सकते हैं. The only advice I have for you is do not necessarily use the same heads, but keep the same essence while you are writing your answers. Okay, and this will definitely make things lot more easier for you as we'll be entering the next phase of IR. Third wala part kya hai ki will be in my next lecture, we'll be looking at the other aspect. Okay, so if you have any kind of questions you can ask, else I'll consider this session as over, and on Friday I'll come up with the next segment of international relations and related questions. Okay, so if there are any questions, I'll be waiting for maybe 30-40 seconds more so that you get an opportunity to put forward your questions and maybe I can help you with some kind of clarification over it. Okay. Also on the very same time on we'll be doing it on Friday. Okay. Friday को फिर से करते हैं and go through these aspects. When you are getting the templates, it is your responsibility to make sure that you are looking at the question paper as well. Questions को देखिए एक बार, आपसे होगा. ठीक है, इसका पर्पस ही यही है कि आपसे हो पाए इजीली बिना मेहनत के ज़्यादा. Okay, so you'll be definitely doing that. Okay, great, Vrinda beta. If there are nothing that you need to ask, so I'll take your leave and my best wishes are there with you. Practice the questions, make sure that you are understanding the demand of the question, try to write some of them, and you'll definitely see yourself getting through the top ranks. Okay, so stay healthy and blessed everyone. Thank you very much. Thank you.